Hello everyone. So welcome to our new lecture. In the previous lecture from this chapter, that is chapter number 2, periodic classification of elements, we have studied the periodic trend for the modern periodic table. In the previous lecture, we have seen the valency and atomic size. Now in this lecture, we are going to discuss the third trend, that is metallic and non-metallic character. Okay, so let us see what is it. It is seen that the metallic elements like sodium, magnesium are towards the left, and non-metallic elements such as sulfur, chlorine are towards the right. Okay, in the modern periodic table, we have seen that metallic elements or the metals are placed on the left side of the modern periodic table, and the non-metals are placed on the right side of the modern periodic table. Okay, the metalloid element, that is silicon, lies in between these two types. Okay, so metalloids are in between the metals and non-metals. Okay, it is seen that the zigzag line separates the metals from non-metals in the periodic table. Okay, elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of this line and non-metals on the right side, and metalloids are along the border of this line. How does this happen? Now, we have seen in the modern periodic table that on the left side of the zigzag line, metals are placed, and on the right side of the zigzag line, non-metals are placed. And in between the metal and non-metal, you will find some metalloids. Okay, so let us see. If we compare the characteristic chemical properties of metals and non-metals, it is seen from the chemical formula of simple ionic compounds that the cation in them is formed from a metal while the anion formed from a non-metal. So cation, that is positive charge, and anion means negative charge. Okay, so cation जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन क्रिएट करता है? मेटल्स क्रिएट करते हैं. ओके, एंड जो अनायन है दैट इज नेगेटिव चार्ज, वो कौन क्रिएट करता है? नॉन मेटल्स क्रिएट करते हैं. ओके, फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड that metal atoms have a tendency to form a cation by losing its valence electron. That means जो metals होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. सो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा कंपाउंड क्रिएट करते टाइम पे, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे. ओके, सो कैटायंस आर गोइंग टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ओके, an important question or important term, that is electropositivity. Question may arise, what is electropositivity? So it is nothing but the tendency of an atom to form a cation by losing its valence electron. Okay, so this property is called as electropositivity. किसी भी मेटल एटम की ये एबिलिटी कि वो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है. ओके, ऑन द अदर हैंड an atom of a non-metal has a tendency to form an anion by accepting electrons from outside it into its valence shell. Okay, लेकिन नॉन मेटल की एबिलिटी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब लूज नहीं करता, गेन करता है. ओके, और अपने वैलेंस शेल में उसे ऐड कर लेता है. इस वजह से नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है. कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. ओके, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयंस हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक we have already seen that the ions have a stable electronic configuration of a noble gas. Okay, so any ion will definitely have a stable electronic configuration because it has lose or accepted some of the electron. Okay, जितने भी ions होंगे मतलब ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को स्टेबल करने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. ओके, how is the ability to lose or accept electrons in the valence shell determined? Now all the electrons in any atom are held by the attractive force
exerted on them by the positively charged nucleus. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है एटम में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है, एक जगह पर फिक्स्ड है, मतलब ऑर्बिट में तो है, मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो उस शेल के बाहर नहीं जा सकते। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस ने क्या किया है, उसे अट्रैक्ट करके रखा है। इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाई इन बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी करेक्ट इट। सो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं, ओके, नाउ सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। ओके, सो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 11। सो इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, and in the second shell there are total 8 electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons are there, and in the last shell there is only 1 electron. So the valence shell, last shell is nothing but तो वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस और जो हमारा सेकेंड शेल होगा या फिर जो नेक्स्ट शेल होगा उसके बीच में, देखो जो वैलेंस शेल है और न्यूक्लियस उसके बीच में हमें एक बैलेंस्ड कंप्लीट ऑक्टेट वाला शेल देखने मिलता है। ओके, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge. देखो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो वैलेंस शेल के ऊपर, मतलब लास्ट शेल के ऊपर क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ओके, thus the number of valence electrons in metals is small. Okay, also the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electrons is small. As a combined effect of these two factors, metals have a tendency to lose the valence electrons to form cations having a stable noble gas configuration. This tendency of an element called electropositivity is the metallic character of that element. मेटालिक कैरेक्टर क्या है, देखो किसी भी एलिमेंट की ये एबिलिटी जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, मेटालिक कैरेक्टर है। क्या है ये, मेटालिक कैरेक्टर है उस एलिमेंट का। नाउ अगर हम लोग सोडियम को कंसिडर करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस शेल को, मतलब आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, वो क्या है, बहुत ही कम होता है। और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ही कम है। अब अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है उस शेल से बाहर निकल सकता है और दूसरे किसी एलिमेंट के साथ वो ऐड हो सकता है, दूसरे किसी एटम के साथ वो ऐड होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ओके, सो इन दैट केस सोडियम एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, मेटालिक कैरेक्टर है किसी भी एलिमेंट का। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिटेल। नाउ द पीरियोडिक ट्रेंड इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजीशन in the modern periodic table. Let us first consider the metallic character of elements belonging to the same group. Now let us see the trend in the metallic character. Okay, same group में जो elements belong करते हैं, for example hydrogen, lithium, okay, sodium. So ये जो same group के elements हैं उनमें हमें क्या देखने मिलता है trend, वो हमें अभी study करना है। While going down a group, a new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electron. This results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons. As a result of this, the tendency of the atom to lose electrons increases. जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, ग्रुप के नीचे आते जाएंगे, मतलब फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड में जाएंगे, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में, सेम ग्रुप में हमें क्या देखने मिलेगा कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का वो क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। और डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो भी क्या होगा, लेस होते जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लास टीचर आपको सिखा रहा है, ओके, द क्लास टीचर इज ऑन द स्टेज, ओके,
क्लासरूम के स्टेज पर खड़ा है, ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहे हैं हम आप सबको। जो लास्ट बेंच का स्टूडेंट होता है उसके ऊपर जो टीचर का इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता है। इफेक्ट क्यों कम है, क्योंकि टीचर और वो स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ओके, मतलब क्या है, जब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो इफेक्ट होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस का उस वैलेंस शेल के ऊपर और उस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या होगा, लेस होगा। और लेस इफेक्ट की वजह से जो एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, वो क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। ओके, ऑल्सो द पेनल्टीमेट शेल बिकम्स द आउटरमोस्ट शेल और लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज लास्ट शेल जो होगा, जो वैलेंस शेल होगा, उससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके पहले वाला जो शेल होगा, सेकेंडरी शेल, वो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट शेल हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। ओके, बट दैट शेल इज गोइंग टू बी अ balanced shell or completely filled octet shell. Okay, due to this the tendency of the atom to lose electrons increases further. The metallic character of an atom is its tendency to lose electrons. Therefore the following trend is observed. What trend is observed? Okay, considering the metallic character, the metallic character of elements increases while going down the group. Okay, सो ट्रेंड क्या देखने मिलता है हमें, कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप्स के नीचे आते जाएंगे, मतलब पीरियड 1 से पीरियड 2 को शिफ्ट करेंगे सेम ग्रुप में, तो जो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, now, while going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge goes on increasing. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electrons decreases within a period from left to right. देखो, in a group from top to bottom, the metallic character is going to increase, but for a period from left to right the metallic character is going to decrease. Okay, this is the trend in modern periodic table considering the metallic character. Now the two factors, namely the increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period, are responsible for increasing the effective nuclear charge. Therefore the valence electrons are held with greater and greater attractive force. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज नहीं कर सकते, मतलब जो एटम होगा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी from left to right within a period, the ability of an atom to become an ion by accepting outside electrons goes on increasing. ये एबिलिटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वो एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन, ओके, द tendency of an element to form an ion or the electronegativity is the non-metallic character of an element. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है किसी भी एलिमेंट का। सो कीप दिस इन माइंड दैट मेटालिक कैरेक्टर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ लेट अस सी द ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। नाउ in the modern periodic table, you will find in group 17 there are 4 halogens. Okay, and you have to remember the name of all these 4 halogen as it is important. Okay, very much important considering the board exam perspective. Okay, so there are 4 halogens in the modern periodic table and all the 4 halogens are in the group 17. Okay, so fluorine is the first halogen, then chlorine having atomic number 17, then bromine having atomic number 35, and iodine having atomic number 53. All these 4 are the halogens in the modern periodic table. Now let us see what is halogen. So in the exam, a lot of time paper you will find this question, name the 4 halogens. Okay, so you have to remember the name properly. The group 17 contains the members of the halogen family.
all of them have the general formula X2. Okay, so that means this halogen atom is going to be a diatomic atom. Okay, it will present in the nature in the form of diatomic gas. Okay, so fluorine, then chlorine, bromine, and iodine. Okay, we have to keep in mind that fluorine and chlorine are found in gaseous state in the nature. Okay, fluorine and chlorine are in gaseous state considering the NTP. Okay, whereas bromine is found in liquid state at normal temperature and pressure, whereas iodine is found in solid state. Okay, नॉर्मली फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं. ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द halogens. Now, do you know that if we take the general formula of any alkaline earth metal, okay, if we add any alkaline earth metal with water, okay, if we want to react this particular type of element with water, what we will see that the hydroxide of this element is going to be created. Okay, and hydrogen gas will be eliminated as a byproduct. Okay, so in the second group you can see that beryllium, magnesium, calcium and strontium and barium, okay, the reactivity is going to increase considering the top to bottom of this group. Okay, so beryllium जो है वो हार्डली वाटर के साथ रिएक्ट होता है, whereas जो मैग्नीशियम है वो स्टीम के साथ, जो वाटर वेपर्स होंगे उसके साथ रिएक्ट होगा. और कैल्शियम, स्ट्रोंथियम और बेरियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं लेकिन एट इंक्रीजिंग रेट्स. ओके, मतलब जो रेट होगा रिएक्शन का वो बेरियम का ज़्यादा होगा स्ट्रोंथियम से, और स्ट्रोंथियम का रेट जो होगा रिएक्शन का वो कैल्शियम से ज़्यादा होगा. सो ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है वो हमें क्या बता रहा है कि बेरियम का रिएक्टिविटी स्ट्रोंथियम से ज़्यादा है, स्ट्रोंथियम का रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है, एंड कैल्शियम हैज़ द रिएक्टिविटी मोर देन मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम हैव द रिएक्टिविटी मोर देन beryllium. So less reactive with water is beryllium. Okay, it is the less reactive alkaline earth metal from the group 2. Okay, that is beryllium. Less reactive with water. Okay, keep this in mind. Now by this we have completed all this chapter number 2. Okay, your homework will be you have to complete the exercise of this chapter. Okay, in the next lecture we will start our new chapter. Okay, until then, goodbye.